Alrighty, hello. Good evening and welcome back to the Law Entrance YouTube channel and to another session of the Hindu analysis. It's a new week, it's Monday, it's 13th of April, and we are live. I hope I'm audible and visible to everyone. Can we have a confirmation in the chat box? A yes in the chat box. If audio is fine, video is fine, PPT is fine, I can see Anirudh, Charmi, Aradhya, Ruhi, Pratyush, Shri, Saranya. Very good evening, guys. Welcome to the stream. क्या हाल चाल है आप लोगों के? How was your weekend? How is prep going? What's up? सब बढ़िया? एक बार एक yes दे दो मुझे chat box में if I'm clearly audible and visible. Okay. ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन. लेट्स बिगिन विद टुडेज एजेंडा. आप लोगों के मैसेजेस थोड़े से डिलेड आ रहे हैं मुझे. अब जाके आई कैन सी योर confirmation. Good evening, Prasti. Good evening, Vishami. All right, let's begin today's discussion. आज है 13th of April. आज वैसाखी भी मनाई जाती है, so happy वैसाखी to everyone who celebrates. Okay, बात करते हैं आज के एजेंडा की. 3 articles today which are of relevance. One is of course the latest update on Iran and US. तो इनकी हो रही थी पाकिस्तान में कुछ बातचीत जिसका कुछ निष्कर्ष, कुछ कंक्लूजन as such आया नहीं है. In fact, hostility बढ़ी गई है थोड़ी. Then we have a couple of editorials. One is on delimitation, one is on tourism with respect to Great Nicobar Island. Both the topics we have discussed prior in previous sessions. But yeah, we'll see what are the new points which have been raised in those editorials. Apart from that, a few articles on the newspaper, like always, and 3 new vocab words, like always. Aradhya saying, won't changing the seat count of parliament need a 2/3 majority? See, depends. अगर डिलिमिटेशन आप एक्सरसाइज करते हो तो उससे तो नेचुरली ही पार्लियामेंट का सीट काउंट आपका चेंज होता है. सो द आंसर इज बोथ यस एंड नो. अगर आपको बिना डिलिमिटेशन के करना है तो आई थिंक मेजोरिटी चाहिए होगी, बट डिलिमिटेशन एक्सरसाइज ऑथराइजेज यू टू चेंज द और इंक्रीज द नंबर ऑफ सीट्स is what my understanding is. Bhamini is here, Parth is here, Ridhima is here, Siddhi is here, Shaurya is here. Very good evening to people who have joined abhi ke abhi. All right, chalo start करें आज की बातचीत. Shall we begin today's discussion and go to the newspaper? Baki, I hope you guys are doing your prep diligently, doing your current affairs consistently, taking your mocks seriously and analyzing them even more seriously. कोई भी डाउट्स हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कभी भी on email or during the sessions. उसके अलावा MHCT की स्पेशल सीरीज चल रही है, प्लीज चेक दैट आउट एज वेल. रीजनिंग की मेरी एक क्लास हो चुकी है, नेक्स्ट क्लास वुड बी दिस वेंसडे where we would be most likely covering conclusions as a topic. Assumptions हम कर चुके हैं, conclusion this class में करेंगे इस week वाली. एंड इस वीक मेंटी क्विज होगा हमारा एज शेड्यूल्ड ऑन फ्राइडे. इस बार के मेंटी क्विज में टर्न आउट काफी कम था, सो आई एम स्लाइटली डिसअपॉइंटेड इन यू गाइस, बट ठीक है, आई एम स्टिल ऑप्टिमिस्टिक एंड होपफुल दैट दिस वीक विल गेट अ बेटर टर्न आउट. सो या टॉपिक्स आप लोग सजेस्ट कर सकते हो. If we have a new interesting topic, we can pick that up. Else, we can continue with our current affairs. जो भी तब तक we would be halfway into April, so we can do 15 days of April के current affairs. That is my suggestion. Apart from that, open to suggestions from all of you with respect to topics of this week's Menti quiz. ठीक है? Chat में क्या चल रहा है? Swara is here. Hello Swara. Anurudh is saying, what do you mean by strategic pivot, as India is a strategic pivot in the hexagon of alliances? Strategic pivot के multiple मतलब हो सकते हैं यहाँ पे. One is we all know India has alliances with all the belligerents. Belligerents मतलब जो भी लड़ाई कर रहे हैं देश, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो यूएस हो, चाहे वो इसराइल हो. So we are in a position where we have diplomatic link with all the countries, and therefore we are a center point in the hexagon of alliances. Now hexagon, I don't know which alliance you are referring to here, but if it is
the six countries which are planning to get into an alliance, then yes, India plays a very important role for, of course, diplomatic reasons, trade reasons, and geopolitical reasons. So that is why India has a strategic pivot. एनालिटिकल रीजनिंग हार्ड थी, जीके डिफिकल्ट थी रिसेंट मॉक में. कैन आई काउंट एमएचसीटी प्रेप क्लासेस? ऑफ कोर्स, एब्सोल्युटली. मैं तो पूरी शिद्दत से पढ़ाता हूँ. आई कैन डेफिनेटली स्पीक फॉर माई सेल्फ एंड फॉर अदर फैकल्टीज एज वेल. आई एम प्रिटी श्योर दैट एवरीवन is giving their absolute best in all of those sessions, and they are useful for all the law entrance exams, and those topics are going to be relevant for your other exams as well. So when I teach assumptions or conclusions, I teach it keeping in mind all the exams, be it CLAT, be it ALIT. So yeah, you can rely on that. ठीक है. All right. Yeah, again, pivot can mean multiple things, as Aradhya pointed out. Pivot का मतलब direction change करना होता है. जैसे startup world में भी the word pivot is often used to change your course of trajectory or direction. ऑलराइटी, मॉक के डिस्कशन चल रहे हैं. ठीक है, चलो न्यूज़पेपर पे चलते हैं हम लोग. एक आध खराब मॉक से आप लोग पैनिक मत हुआ करो. और it should not put your preparation or mindset off track by any means. It's just a learning process, so take it in that positive stride, and it's okay, part of the journey. खराब मॉक, अच्छे मॉक. Okay, I hope the newspaper is visible. I hope it is scrolling as well. Just give me a quick yes in the chat box. Are we good to go? Is the newspaper scrolling as I scroll? And is it visible as it is visible to me? Yes in the chat, please. Very quickly. Perfect. Sahana is here. Scarlet Cute 2014. It's an interesting username. ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है. Thank you, thank you, thank you, thank you for your confirmation, people. Let's begin our discussion. Iran US blame each other as talks end without a deal. Now we all know that what has been going on in the past few weeks, rather months now, and recently ceasefire was announced as the major development in the West Asian crisis, and this ceasefire is going to end on 22nd of April. And meanwhile, talks were held in Pakistan to extend the peace and resolve the issues. काफी लंबी चली ये talks, around 20 plus hours, but it ended without any agreement between both the parties. Both blamed each other, as the title says. जहाँ पे US का कहना था कि ईरान refused to give up the possibility of making a nuclear weapon, जबकि ईरान का कहना था the US made unreasonable demands which we felt were an overreach on our sovereignty. तो मेन इशू यही है कि यूएस वांट्स ईरान टू क्लियरली प्रॉमिस कि भाई आप न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाओगे, एंड यू वुड स्टॉप डेवलपिंग टूल्स दैट कुड लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ अ न्यूक्लियर वेपन. ईरान का कहना है कि हमें नहीं चाहिए न्यूक्लियर वेपन, बट हमारे पास एक राइट होना चाहिए टू अ सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम फॉर एनर्जी पर्पसेस, फॉर अदर पर्पसेस. एक्सपर्ट्स का कहना है कि ईरान के पास ऑलरेडी enriched यूरेनियम है विच इज ऑलमोस्ट क्लोज टू वेपन्स ग्रेड, तो वो कभी भी जो है वेपन्स बना सकते हैं. अब यहाँ पे जेडी वैंस का कहना है कि दे वांट अ फर्म गारंटी फ्रॉम ईरान, एंड दूसरी साइड से ईरान के रिप्रेजेंटेटिव का कहना है कि यूएस को पहले अपना प्रूव करना पड़ेगा कि हम उनको ट्रस्ट कैसे करें कि वो जो है हम पे सैंक्शंस या फिर जो भी रेपरकशंस है वो नहीं लगाएंगे. तो यही है कि दोनों साइड जो है दे एज ऑफ नाउ वांट टू मेंटेन द सीज फायर एंड कीप टॉकिंग, but no conclusion has been reached as of now. It's still uncertain ki what would happen after 22nd of April when the ceasefire would end. Pakistan is trying to restart the talks, but abhi we see no progress. Meanwhile, a lot of people have died in Israel, in Iran, in Lebanon, nearby regions. Infrastructure बहुत सारा damage हो चुका है. Strait of Hormuz हमें पता ही है. It is disrupted for quite a while now. So yeah, these are the latest updates with respect to the war. बाकी और क्या है हमारे पास? Let's move ahead. Electorate falls by 10.2%. मतलब number of voters है यहाँ पे SIR process की वजह से. ठीक है, we know this. Asha Bhosle ji, a versatile singer, she passed away recently. Very tragic loss to the world of singing, to the world of music. वेरी लेजेंडरी सिंगर. इनकी हम करेंगे बातचीत थोड़ी सी डिटेल में आगे चल के. एक पूरा पेज डेडिकेटेड है आशा जी के ऊपर. तो देन विल टॉक अबाउट हर, हर लाइफ, हर अचीवमेंट्स एंड मल्टीपल अदर थिंग्स. ठीक है, सिटी बेस्ड न्यूज इज नॉट इम्पॉर्टेंट, यू कैन स्किप दिस.
स्टेट बेस्ड न्यूज में भी आज कुछ रेलेवेंट हमारे पास है नहीं. तमिलनाडु आउट परफॉर्म्ड अदर स्टेट्स says Stalin, their CM. DMK is a party of corruption says Piyush Goyal. अंबेडकर जी की एनिवर्सरी आ रही है. ठीक है. त्रिपुरा ट्राइबल पोल्स नॉट इम्पॉर्टेंट. कैंसर कोर्सेस थ्रू घग्गर also not important. LDF win 90 seats, not important. Haryana C2 leaders, not important. 30 Karnataka MLAs head to Delhi. ओके. स्टेट न्यूज़ में हमारे पास आज कुछ भी रेलिवेंट नहीं है फ्रॉम क्लैट परस्पेक्टिव. एडिटोरियल की बात करते हैं. डिलिमिटेशन एंड नॉट विमेंस रिजर्वेशन इज द इशू. ये लिखा है सोनिया गांधी जी ने, जो है कांग्रेस की चेयरपर्सन. करेंगे हम इस आर्टिकल की बात. वैसे तो मैं डिलिमिटेशन आप लोगों को कई बार बता चुका हूँ. व्हाट इज इट एंड व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस विद रिस्पेक्ट टू विमेंस रिजर्वेशन भी हम बात कर चुके हैं. बट देखते हैं इस आर्टिकल में क्या है. विल सी इट ऑन द पीपीटी. ठीक है. लेफ्ट हैंड साइड पे लेट्स सी व्हाट इज द आर्टिकल. एल्यूसिव डील, यूएस एंड ईरान कंटिन्यू डिप्लोमेटिक एफर्ट्स टू एंड द वॉर. दिस इज प्रीटी मच सिमिलर टू व्हाट वी डिस्कस्ड ऑन द फ्रंट पेज की लगभग 40 डेज होने को आ गए हैं वॉर को. स्टार्टेड अराउंड इन द एंड ऑफ फेब्रुवरी एंड कोई भी जो है क्लियर अग्रीमेंट नहीं मिल पाया पाकिस्तान वाली टॉक्स में. एंड द सीज फायर इज स्टिल अनस्टेबल बिकॉज इसराइल इज कंटिन्यूइंग इट्स एयर स्ट्राइक्स इन लेबनान, इन बेरूत. एंड ईरान और पाकिस्तान का कहना है कि लेबनान को भी सीज फायर में इंक्लूड कर लो. इसराइल डिसएग्री कर रहा है. दे आर सेइंग दे वांट टू कीप फाइटिंग अगेंस्ट हिजबुल्लाह व्हिच इज ऑपरेटिंग फ्रॉम देयर. तो इन्हीं इश्यूज की वजह से डिसएग्रीमेंट है. ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की वजह से, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की वजह से, लेबनान पे अटैक्स की वजह से. यही कहता है ये आर्टिकल भी कि डोनाल्ड ट्रंप इज बीइंग क्रिटिसाइज्ड फॉर लीविंग द 2015 Iran nuclear deal earlier and also for starting this particular war. And they suggest how US should now focus on negotiation rather than ultimatums, deadlines, and pressure tactics. On the other hand, Iran should also not become overconfident. They should also be open to compromise, especially on important issues. So वही है कि सजेशंस हैं कि दोनों साइड को जो है साथ मिलके दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाना चाहिए, लड़ाई लड़ाई माफ करनी चाहिए. यही सारी बातचीत है, नया कुछ नहीं है. एक बार चैट देख लेता हूं मैं. Saranya is saying, sir, can you give a brief about the meaning of delimitation? Absolutely. देखो, आप लोगों ने कॉन्स्टिट्यूएंसी वर्ड सुना होगा कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से कोई रिप्रेजेंटेटिव होता है पार्लियामेंट में, स्टेट असेंबलीज में. तो कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होती है? कॉन्स्टिट्यूएंसी एक लैंड बाउंड्री होती है जहाँ पे एक सेट नंबर ऑफ वोटर्स होते हैं. ठीक है. एक सिटी में मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूएंसीज भी हो सकती हैं, एक कॉन्स्टिट्यूएंसीज भी हो सकती हैं. जैसे माई होम टाउन इज बरेली, तो वहाँ पे 7 डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं. बरेली सिटी, बरेली कैंट एंड नियर बाय टाउन्स. तो मतलब 7 रिप्रेजेंटेटिव्स वहां से जो है स्टेट असेंबली में जाते हैं. तो दैट इज हाउ अ कॉन्स्टिट्यूएंसी इज डिफाइंड बेस्ड ऑन लैंड बाउंड्री, टेरिटोरियल बाउंड्री, एंड ऑल्सो बेस्ड ऑन पॉपुलेशन ऑफ कोर्स. कि पॉपुलेशन जिस शहर में ज्यादा होती है वहाँ ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं, जिस शहर में कम पॉपुलेशन होती है वहाँ कम कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं. करेक्ट. सो अब ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, जब हमारा सेंसस होता है तो पॉपुलेशन के हमें नए फिगर्स मिलते हैं. जब पॉपुलेशन के नए फिगर्स मिलते हैं तो इट मेक्स सेंस टू रीड्रॉ दीज कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बाउंड्रीज, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ गई है. तब जैसे मैंने बरेली का एग्जांपल लिया, तो बरेली में मान लो लेट से पॉपुलेशन वाज 15 लाख एज पर द 2011 सेंसस. नाउ एज पर द अपकमिंग सेंसस, let's say the population is now 25 lakhs hypothetically. So 7 constituencies would be lesser to represent 25 lakh people, so maybe they would increase it to 9 constituencies. Boundaries वो redraw करेंगे constituencies के ना. So this process of redrawing the boundaries of constituencies and increasing, decreasing the number of constituencies or representatives is called delimitation. इस पूरे प्रोसेस को डिलिमिटेशन कहते हैं, जो सेंसस के बाद कराया जाता है. एंड क्यों इंपॉर्टेंट है ये? बिकॉज इट हैज अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द पार्लियामेंट्री सिस्टम. जितने ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव्स एक पर्टिकुलर स्टेट के या एक पर्टिकुलर रीजन के, उतना ज्यादा उनका मोर से इन द पॉलिसी मेकिंग ऑफ द कंट्री, लॉ मेकिंग ऑफ द कंट्री. तो इसीलिए साउथ इंडियन स्टेट्स कई बार आपको देखने को मिलता है अगेंस्ट है डिलिमिटेशन के, क्योंकि वहां पे पॉपुलेशन ग्रोथ उतना रैपिडली नहीं हुई है जितना नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में हुई है. सो दिस वुड बी अनफेवरेबल टू देम. दिस वुड बी biased towards them कि उनको जो है नुकसान हो रहा है पॉपुलेशन कंट्रोल करने का. So they are being punished for not having a population explosion in their particular state. So that is the whole controversy around delimitation. And women's reservation also overlaps in this picture, because
The current government, pehle they were planning to bring the women's reservation after the delimitation process and for the 2029 elections, but now they are trying to fast track the women's reservation so that they can get benefit of the existing majority which they have and the existing power which they have in the upcoming state assembly elections in places like UP and other elections, state elections, so that women's reservation होगा तो उनको जो है थोड़ा सा फायदा मिल जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स जो है आपको बढ़ानी पड़ेंगी वुमेन रिजर्वेशन अकोमोडेट करने के लिए. सो दैट इज हाउ द होल थिंग इज गोइंग ऑन. समझ में आया थोड़ा थोड़ा? Okay. Scarlett is saying, sir, I'm currently reading Times of India. Do you prefer it? I won't prefer it. उसमें जो है कंपटीशन एग्जाम रेलेवेंट न्यूज़ थोड़ी कम होती है. आई फील थोड़ी सी पॉलिटिकल न्यूज़ ज़्यादा होती है, लोकल न्यूज़ ज़्यादा होती है. ठीक है, बहुत खराब नहीं है, मतलब इफ यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन इट्स बेटर देन डूइंग नथिंग. बट माय सजेशन वुड बी इधर चूज द हिंदू और चूज द इंडियन एक्सप्रेस, जो भी आपके यहाँ पे अवेलेबल हो. कोई भी अवेलेबल नहीं है तो आप ऑनलाइन वर्जन पढ़ सकते हो. एंड अगर आपको ऑनलाइन वर्जन भी नहीं मिल रहा तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको बता दूंगा कहाँ से यू कैन जुगाड़ो द ऑनलाइन न्यूज़पेपर वर्जन ऑफ द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस. So I think, sir, we are struggling in analytical reasoning. Please do something. आपके analytical reasoning की class होंगी in the MHCT वाली series. That should definitely help. I have conveyed कि आप लोगों को analytical reasoning में help चाहिए. And I'm sure that some classes are planned in the upcoming few days. And अगर नहीं होती तो I'll try to take some classes myself. ठीक है? Tension ना लो. खराब नहीं होने देंगे आपके analytical reasoning. What is the criteria needed to get an editorial accepted in the Hindu? It has to be of relevance, of course. It has to be of academic merit. It has to be factually accurate, and it has to be approved by the editors. यही criteria हैं. Usually email यहाँ पे लिखा होता है कहीं ना कहीं, आपको अगर अपने सबमिट करना हो submissions तो कहीं तो मैंने देखा है कई बार email ID इनका लिखा हुआ, अभी मुझे दिख नहीं रहा. ठीक है, दिखेगा तो मैं बता दूंगा, वरना आप गूगल भी कर सकते हो, कोई ना कोई आपको ईमेल आईडी मिल जाएगा वहाँ पे. यू कैन मे बी आस्क द एडिटर्स. Visham is saying, old friend of mine sent a few years ago, got accepted. He focused on less than 800 words limit, no plagiarism. Of course, that goes without saying कि भैया आप copy paste plagiarism नहीं कर सकते, and facts have to be checked and written well. That is quite understandable. Okay, आगे चलते हैं हम लोग. Let's move ahead. Why India's established elite is afraid of taking risks. इंटरेस्टिंग आर्टिकल है. एक मूवी आई थी काफी टाइम पहले रणबीर कपूर की, उसका नाम था रॉकेट सिंह. आई डोंट नो कितनों ने देखी है. काफी अंडररेटेड मूवी है, काफी अंडर अप्रिशिएटेड मूवी भी है. उसमें एक डायलॉग था रणबीर सिंह का, where he was a salesman. He was doing the role of a salesman. And he said कि रिस्क तो स्पाइडरमैन को भी लेना पड़ता है, मैं तो फिर भी सेल्समैन. अब ये आर्टिकल इट टॉक्स अबाउट सिमिलर थिंग्स. दिस टॉक्स अबाउट हाउ in India's business world we are not very risk taking. We have the wealth, we have the opportunity, but people are not taking enough risk. And he gives you multiple analogies, gives you a couple of stories to prove his point. And he says that there was a person called Anthony Patch who had everything, money, education, connections, but he did nothing while waiting for his inheritance. And जब उसके पास वो wealth और inheritance आई, उसके पास वो ability ही नहीं थी to use it well. And he says that similar behavior is now seen in India's rich business families. कि जो family owned businesses हैं, they are being sold and they are being inherited by other people. And they are profitable indeed. They have the growth potential. Multiple examples इन्होंने दिए. But instead of running these businesses, the next generation prefers investing money in stocks, real estate, managing family wealth, instead of building the company and driving it towards growth and expansion. And this is surprising because we are currently a growing economy. We have global opportunities. We have plenty of capital. We have demographic dividend, young population. Yet these wealthy inheritors are choosing a safe and passive option over building businesses. अब इसके वो explanations देते हैं. क्या explanations हो सकते हैं? पहला explanation is what he calls elite overproduction. This is a theory by a person called Peter Turchin, जो कहते हैं कि when there are too many educated elites, it creates competition for the top positions. And India के case में instead of competing or innovating, the elites are avoiding risk and focusing on protecting their wealth, जिससे money is going into safer assets and not into exploring new ideas. India से आपने
रेयरली ही देखा होगा कि कोई ग्लोबल ब्रांड निकला हो विच हैज़ अ ग्लोबल प्रेजेंस, चाहे वो फूड सेक्टर हो, चाहे वो ट्रैवल सेक्टर हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, चाहे वो ऑटोमोबाइल सेक्टर हो। ऑटोमोबाइल में चलो ठीक है, टाटा वाटा की गाड़ियाँ दूसरे देशों में भी चलती है, महिंद्रा की चलती है, बट on a broader scale, when you see, there are no global startups which come from India, and we have a R&D problem, we have an innovation problem. We try to copy ideas from the US. US में Uber देखा हमने, ओला बना दिया, US में हमने DoorDash देखा हमने, स्विगी जोमेटो बना दिया. So that is not innovation, that is optimization and adapting. So they are saying that Indian companies spend very little on R&D, research and development, as compared to countries like China or even smaller countries like South Korea and Japan. क्योंकि R&D है risky process, उसमें आते हैं results धीरे धीरे, and you can, of course, there's a higher chance of failure. So it's a safer alternative to invest in real estate. Okay, calm down, relax. I realized that my network went away suddenly. Wi-Fi stopped abruptly. That is why. I realized it pretty soon. So, am I back now? Am I back with the newspaper? Give me a quick yes. If audio is back, video is back, newspaper is back, everything is back. We good? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है. Wi-Fi stopped suddenly for some reason. I don't know why. मैं आप लोगों को बता रहा था कि how these wealthy inheritors are not taking risk, and we are not doing research and development R&D because it's a slow, risky process where there are chances of failure. We're just copying businesses from the West, which is in contrast with the past entrepreneurs and industrialists which we have had. चाहे वो धीरूभाई अंबानी की बात हो, चाहे वो टाटास की बात हो, चाहे वो और पुराने इंडस्ट्रियलिस्ट की बात हो. These people took huge risks. They built major industrial projects of huge scale, and they could have been a failure, but they were successful and they transformed entire industries. And they built everything from scratch, from zero. They took bold bets on their business insights. But now that thing is not happening. इस समय risk averse approach हो गई है, थोड़ी सी passive investing वाली approach हो गई है, preservation वाली approach हो गई rather than creation वाली approach. And he says another explanation of this could be a cultural shift, that the society is moving from a culture of building and risk taking towards a culture of settling a civilization where you are managing and preserving wealth. So India's elite are now thinking like portfolio managers, wealth managers rather than builders. They are protecting their wealth and growing their wealth in a safe manner. And core problem ये नहीं है कि हमारे पास entrepreneurs नहीं है. We have a lot of new founders. Capital भी available है. The issue is that जिनके पास सबसे ज़्यादा power और पैसे हैं, they are avoiding risk. They are not investing in big long-term innovation. जैसे यूएस में होता है या बाकी कंट्रीज में होता है. तो टेक अवे यही है कि वी नीड टू स्टार्ट टेकिंग मोर रिस्क. द वेल्दी क्लास नीड्स टू बिल्ड द फ्यूचर, not just manage their money and grow their money passively. That is what he's arguing for. Left hand side, you see tourism and trade. This we'll discuss on the PPT. This is with respect to the Great Nicobar project. Okay, chat में क्या चल रहा है? ठीक है. Tanish is saying, hello sir, I'm new here. I've started my CLAT prep this year. I'm in class 11th. Started watching your videos earlier this month. Please tell, is it too early to start reading a newspaper? No, it's not too early to start reading a newspaper. Maybe you can skip taking notes of GK current affairs, but newspaper is a habit which the sooner you build, the more compounded results you will get out of it, in terms of your understanding of complex topics, in terms of your reading speed, in terms of your comprehension skills, in terms of your vocabulary, in terms of your general awareness about things. So all in all, very beneficial for a student who's starting early, and it's great that you're starting early.
So yeah, please stick to the newspaper. Charmi Singh, I mean, I understand the point, but isn't it their choice to what to do? Absolutely their choice. मैं थोड़ी कह रहा हूँ करना ही चाहिए. Author कह रहा है करना चाहिए. मेरे पास होते 1,000 करोड़ रुपए, मैं भी आराम से बैठ के चिल मारता. It's what the author is arguing, and I get his point. He has a fair point, but yeah, you have a fair point too. That is their money, their choice. अब उनको चाहे शादी में रिहाना को नचवाना हो या बिजनेस बनाना हो, उनकी मर्जी. हु आर वी? फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो भाई साहब ने कह दी अपनी बात. आपके पास भी फ्रीडम ऑफ स्पीच है और फ्रीडम ऑफ ऑटोनॉमी है, तो आप मत मानो उनकी बात. ठीक है, चलो आगे चले. लेट्स मूव अहेड. टैपिंग फिशरीज इन रिजर्वॉयर्स. तो हमारे बजट में इस बार काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स थे विद रिस्पेक्ट टू फिश प्रोडक्शन, फिशरीज, एंड इसको जो वर्ड देते हैं हम, वी कॉल इट एक्वाकल्चर एंड पिसिकल्चर. And the budget focuses a lot on this, on increasing fish production, on increasing the income of fish farmers, especially in rural areas and वाटर स्कार्स एरियाज. अभी इंडिया के फिशरी सेक्टर की बात करें तो वी आर द सेकेंड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर ग्लोबली, द सेकेंड लार्जेस्ट इन एक्वाकल्चर, एंड प्रोडक्शन पिछले कुछ सालों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है. एंड मोस्ट ऑफ इट इज कमिंग फ्रॉम इनलैंड फिशरीज. इनलैंड फिशरीज का मतलब होता है रिवर्स, पॉन्ड्स, रिजर्वॉयर्स, एज अपोज टू आउटलैंड फिशरीज वुड बी oceans and seas. तो यहाँ पे he talks about the role of reservoirs. Reservoirs cover approximately more than 30 lakh plus hectares of pisciculture, and they produce around 18 lakh tons of fish, which is important for rural livelihood, employment, and food security. Prime examples are states like Madhya Pradesh and Tamil Nadu, which have large reservoir areas and high number of reservoirs. MP में largest area है, Tamil Nadu में highest number of reservoirs हैं. And he talks about how fish production has improved in the past decade due to government intervention through multiple schemes. And जो फिशरी सेक्टर में हमारा प्रोग्रेस है, उस रेवोल्यूशन को हम ब्लू रेवोल्यूशन कहते हैं. जैसे जो हमारा एग्रीकल्चर में रेवोल्यूशन था उसको हम ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं. जो मिल्क प्रोडक्शन में हमारा रेवोल्यूशन था उसको क्या कहते हैं, जल्दी से बताओ in the chat box. Question for you guys. तो ब्लू रेवोल्यूशन कह लो या फिर पीएम मत्स्य संपदा योजना कह लो. मत्स्य इज द संस्कृत वर्ड, द हिंदी वर्ड फॉर फिशेस, जिसमें वी आर यूजिंग केज कल्चर टेक्नोलॉजी एंड एडवांस मेथड्स टू कैच फिशेस. जिसमें फिशेस आर ग्रोन इन अ फ्लोटिंग एंड फिक्स्ड केज इन अ वाटर बॉडी, which is easier for feeding and monitoring, better oxygen flow, better disease control. And this is commonly done for Indian fishes like catla fish, rohu fish, mrigal fish, and others as well. Salmon वगैरह, tilapia वगैरह, काफ़ी सारी varieties होती हैं इंडिया में. So he talks about how there's a person from Jharkhand called Bimal Oran who has been using these cage culture things. He got training, subsidies, and now is earning pretty well, which shows that if policies are done right, there can be a massive change in the lifestyle of people from rural areas, and they can have real income growth. And there's a lot of future potential, which he talks about as per ICAR, Indian Council of Agricultural Research. The production has more potential to be increased, and this can be done once we have a full value chain development, जहाँ पे hatcheries भी हो, जहाँ पे fishes are hatched, जहाँ पे feeding mills हो, जहाँ पे storage और ice plants हो, जहाँ पे transportation और markets और logistics हो. So yeah, he talks about how we need a cluster-based strategy where we develop these reservoir clusters for efficiency. Indrasagar Dam is one example which he gives. And Mission Amrit Sarovar is another initiative which the government is running to develop village ponds. यहाँ पे minimum 1 acre का size होगा, community manage करेगी उसको. And the goal would be water conservation and creation of livelihood through fisheries. So the bigger picture is this aligns with the whole Viksit Bharat mission, where we want to empower fish farmers and boost rural economy and strengthen food security and all of those things. ठीक है जी, उसके लिए हमें चाहिए बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, बेटर इनोवेशन, बेटर रिजर्वॉयर्स, ताकि हम लोगों की इनकम इंप्रूव कर सकें. White revolution is the right answer, absolutely correct. Pujit is saying, sir, how to nail in math section for a student bath in it? I'm not the best person to answer this question. I also am bad at maths. But from my experience as an exam taker and as a mentor, what I can tell you is start with the basic, easy topics first. Get comfortable with the subject first. That is most important. And don't delay it. बहुत सारे स्टूडेंट्स मैथ्स पसंद नहीं करते या मैथ्स से डरते हैं और उसको लास्ट तक के लिए छोड़ देते हैं. दैट इज अ बिग ब्लंडर इन माय ओपिनियन. मैथ्स इज अ सेक्शन विच गिव्स यू अ मैसिव advantage over other people because maximum law aspirants are not comfortable or good with maths.
तो अगर आप मैथ्स पे पकड़ बना लेते हो, दैट्स अ बिग बिग प्लस फॉर यू. And how to do that is by starting with simple topics like percentage हो गया, number system हो गया, learning how calculation tricks work, and then practicing very simple data interpretation sets, and then building on that skill with regular practice. ठीक है, there are so many mentors available on YouTube, available through different institutes. अगर आप CL student हो तो you'll have access to them as well. बाकी free resources भी बहुत सारे available हैं. You just need to focus on what is asked in the CLAT exam and find out what's the best resource for it as per you, and then just stick to the concept and practice. That's the only way. And start as early as possible. The more you practice, the faster and better you get. So, what was your CLAT score? Back in my days, in 2019, when I went to Nalsar, my rank was 111, triple one, and back then the exam used to be of 200 marks. So we were supposed to solve 200 questions in 2 hours, as opposed to the current pattern. And my score was 161 point something. I don't remember, 0.25 or 0.75, but 161 point something था मेरा score, on which I got all India rank triple one and went to Nalsar. उससे पहले भी मैंने क्लैट दिया था 2018 में भी, तब भी 200 मार्क्स का होता था. तब कट ऑफ्स वर लोअर. तब my rank was 564, all India rank 564. I went to Arjunal Patiala. Was not satisfied with my result. उस साल काफ़ी सारे technical glitches हुए थे. उस टाइम ऑनलाइन हुआ था एग्जाम 2018 में, and they changed the vendor, and there was nothing on my screen. It was stuck for 15 minutes, and as a result I got lesser time and therefore could not get a top rank. But yeah, went to Arjunal, studied there for a year, took the exam again in 2019. The pen and paper हुआ exam, and finally got to Nalsar. ठीक. Sir, were the questions one liners or paragraphs like current CLAT? तब one liners होते थे. GK used to be one liner based. तब paragraphs नहीं होते थे. But on the opposite end, quant used to be slightly on a more diverse end, I would say. Not tougher end, but on a more diverse end. We had more topics to cover in terms of quant. So quant used to be a pain in the backside for aspirants back then. How is the environment at NASA? It was pretty good in my tenure. I graduated in 2024, so it's been a couple of years now since I graduated. I joined in 2019, graduated 2024, and had great time. I mean, Nalsar changed me as an individual. Nalsar made me who I am. The best thing which I got out of Nalsar is probably understanding things from diverse perspectives, understanding nuances, and at the foremost, critical reasoning. When you are in a diverse set of students who are all equally brilliant, if not more, then you learn about so many things. You learn about gender issues, you learn about caste issues, you learn about social issues, you learn about various perspectives, you learn about various socioeconomic backgrounds. And of course, the curriculum is also designed in a way which challenges you academically. So you learn how to think out of the box. A lot of exams in NALSAR are open book exams. So you can take any material, any book, any resource you want, but question इस तरीके से फ्रेम होगा कि अगर आपने क्लास में अच्छे से नहीं पढ़ा और आपने खुद से नहीं समझा और खुद से दिमाग नहीं लगाया तो आप फेल हो जाओगे. कितनी मर्जी किताबें ले जाओ, किताब में है ही नहीं आंसर उसका. So it's more application based rather than rectification and theory based, as opposed to a lot of different law schools. Even when I compare it to Arjunal, the academic standards are definitely a notch higher. Arjunal has a special place in my heart because it was my first college, and I found the environment to be more compatible with my personality because it was in Punjab. I am a Punjabi. The food was familiar, people were familiar, culture was familiar. So yeah, that does not mean Nalsar is hostile in any way. You adapt slowly, but yeah, overall 10 on 10, lovely experience. Should I take MEC or CEC? Could you elaborate? What is MEC and CEC? CEC to Chief Election Commission hota hai. So what I was saying, sir, what percent of CLAT exam givers give CLAT for just TP? I mean, without much prep. Sorry for such a nebulous question. No, it's not a nebulous question. I would say around 10%. आप मान के चलो नहीं, अच्छा without prep पूछ रहे हो आप. Without prep होंगे around आप मान के चलो around 1/3 people give it without prep. So if 60,000 people are appearing, 20,000 are appearing without any prep.
So your competition is actually with around 40,000 people. And उस 40,000 में भी diligent prep वाले पूछो जिन्होंने अच्छे से actual मेहनत करी है, सिर्फ casual मेहनत नहीं करी, तो that would be around 15 to 20,000 people. So actual competition is with 15 to 20,000 people for the top 600-700 seats if you're aiming for the top 3-4 colleges. Math, economic, commerce, and what is CEC? Commerce, economic, and civics. See, if you like maths, if you are comfortable with maths, then definitely choose math. If you're not someone who likes math, then go with the second option. It's pretty simple. I was a science student. I wanted to have humanities as my subjects, but in my city, the best school did not offer humanities as a stream. There were only maths and commerce streams available. So I went with science. In retrospect, could have chosen commerce as well. Science was really challenging, not as easy as the 9th, 10th class science, but yeah, it definitely helped open up my brain a lot. I was PCM plus computer. So physics भी, chemistry भी, maths भी, computer भी, programming भी, organic chemistry भी, optics भी, thermodynamics भी, सब पढ़ा है मैंने. और फिर खुद से मैंने इकोनॉमिक्स भी पढ़ी है, खुद से मैंने कॉमर्स भी पढ़ी है, खुद से मैंने सारे बिजनेस स्टडीज वाले सब्जेक्ट पढ़े हैं बिकॉज आई वाज इंटरेस्टेड इन दोस. सो आप कह सकते हो एक सेल्फ टॉट MBA लेवल की मुझे अंडरस्टैंडिंग है ऑफ ऑल द बिजनेस स्टडीज वाले सब्जेक्ट. Prasiddhi is saying, I've taken humanities as my stream. I love the subject. We have sociology and politics. And you'll love them. You'll love them in law school as well if you are, enjoying those subjects in school. Tanish is saying, I'm still confused with streams to opt. देखो it depends on your interest यार. जिसमें आपको ज़्यादा मजा आए, जिसमें आपको पढ़ना सबसे कम टायरिंग लगे, वो स्ट्रीम आपको चूज करनी चाहिए. किसी भी पीयर प्रेशर में या पेरेंटल प्रेशर में स्ट्रीम चूज करना इज नॉट अ गुड चॉइस. आई कैन नॉट इवन ब्लेम माई पेरेंट्स बिकॉज दे लेफ्ट द चॉइस टू मी एंड मैंने खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी साइंस चूज करके. उन्होंने कहा जो आपको अच्छी लगे ले लो. मैं कहा साइंस ले लेते हैं. फिर अच्छे नंबर आ गए 10th में, 93-94% आ गए हैं, तो होशियारी होऊंगा फिर तो मैं कर सकता हूँ इसका मतलब साइंस. तो फिर 11th में मेरे 65% मार्क्स आए. नॉट बिकॉज आई वॉज बैड स्टूडेंट, बिकॉज आई डिड नॉट स्टडी. आई वॉज नॉट एंजॉइंग दो सब्जेक्ट्स. फिर 12th में अच्छे आ गए थे. 12th में थोड़ा सा पिकअप कर लिया मैंने. Charmi saying I did science for 1 year, then quit it and did commerce. Say yeah. Parth is saying, what do you do other than this? As you said, you don't practice as a lawyer. Am I supposed to disclose this? I'm not very sure. But I do a couple of other things apart from this. I work with a couple of startups. I consult startups as well. I run a venture of my own as well. मेरे बारे में आप थोड़ी सी रिसर्च करोगे तो शायद आपको पता भी चल जाएगा. गूगल वगैरह पे देखोगे तो, या मेरा लिंक्डइन वगैरह स्टॉक करोगे तो आपको पता चल जाएगा मैं क्या क्या करता हूँ. बट हाँ, काफ़ी कुछ करता हूँ मैं. दिस इज़ नॉट द ओनली थिंग आई डू. दिस इज समथिंग आई डू फॉर द लव ऑफ टॉकिंग टू पीपल, फॉर द लव ऑफ गिविंग इट बैक, because I have learned a lot from my mentors. So yeah, this is a passion project. This is not for money. This I'm doing just for fun. चलो ठीक है, बहुत बातचीत हो गई. वापस आते हैं हम अपने न्यूज़पेपर पे. क्वेश्चंस तो आई एम ऑलवेज हैप्पी टू आंसर. थोड़ा सा ऑफ ट्रैक चले गए मेरी पर्सनल लाइफ में, बट कोई बात नहीं. Okay, next up we have between 14 years and the gallows. This is regarding a case, CBI versus Sridhar. And not that important for us, just पढ़ लेते हैं हम इसकी. The death sentences for the Satankulam custodial killings highlight a conflict between the rarest of rare doctrine and the legal restrictions, with the trial judge choosing the death penalty over an inadequate life sentence because judicial precedents barred them from imposing a fixed term non-remittable sentence. Non-remittable मतलब जो कम नहीं किया जा सकता है. And rarest of rare case doctrine is regarding death penalty. आप death penalty सिर्फ rarest of rare case में दी जाएगी इंडिया में. कौन से केस ने establish किया था? This is a landmark case. हमने ये मेंटी क्विज में भी एक दो बार देखा है क्वेश्चन. Rarest of rare doctrine was established through which case? Can anyone tell me in the chat box? So I was saying I wanted to take science but math नहीं चाहिए. I love organic chemistry and physics sometimes. देखो कुछ स्कूल्स देते हैं वो ऑप्शन विदाउट मैथ्स साइंस लेने का. Yes, this was the Bachchan Singh case. Absolutely correct. Nicely done. The critics are arguing that this outcome highlights a broken ladder in the Indian jurisprudence, where the Supreme Court's Shri Haran decision forces trial courts into binary sentencing, या तो डेथ या 14 years की जेल.
by withholding the middle ground of long-term imprisonment, a tool now default at the appellate level. ठीक है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग के लिए रेलेवेंट नहीं है, थोड़ा ज़्यादा ही नीश है. Are biomass stoves a cleaner, cheaper alternative to LPG? Improved cook stoves offer a sustainable solution by increasing thermal efficiency, reducing smoke, and cutting firewood usage by 50%. Mass adoption of efficient biomass stoves does not require massive infrastructure investment as local renewable fuels like wood and agricultural waste are readily available. तो जो बायो से बने फ्यूल उसको हम कहते हैं बायोमास, और उस पे जो स्टोव्स यूज करते हैं वही ये डिस्कस करता है आर्टिकल कि आर दे आर चीपर ऑल्टरनेटिव टू एलपीजी, कैन दे बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ एलपीजी इन दिस क्राइसिस सिचुएशन. ओके, आगे चलते हैं. Support women's quota law amendments, PM says to the parties. Mallikarjun Kharge कह रहे हैं, the calling of sitting during election reinforces our belief that the government is hurrying the implementation of this bill to gain political mileage rather than truly empower women. We discussed this अभी recently जब मैं delimitation समझा रहा था आपको. China giving fictitious मतलब होता है नकली names to Indian territory, says center. तो चाइना के साथ हम second largest land border share करते हैं आफ्टर विच कंट्री. किस कंट्री के साथ हम सबसे ज़्यादा लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं बताओ चैट बॉक्स में, कई बार हम डिस्कस करते हैं. तो बॉर्डर डिस्प्यूट हमारा चलता ही रहता है चाइना के साथ कुछ ना कुछ अक्रॉस द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LAC जिसको हम कहते हैं. काफ़ी रीजन्स जो हैं डिस्प्यूटेड हैं, कुछ अरुणाचल में डिस्प्यूटेड रीजन्स हैं, कुछ लद्दाख में डिस्प्यूटेड रीजन्स हैं. एंड इंडिया ने जो है हर बार चाइना के एक्शंस को रिजेक्ट किया है, कॉलिंग द मिस्चीवियस एंड फॉल्स क्लेम्स. एंड रिसेंटली हमारे जो फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन है रणधीर जायसवाल जी, उन्होंने कहा कि दीज प्लेसेस इंक्लूडिंग अरुणाचल प्रदेश आर ऑलवेज अ पार्ट ऑफ इंडिया, दे कैन नॉट बी चेंज्ड बाय रीनेमिंग. चाइना कर क्या रहा है? चाइना इज गिविंग चाइनीज नेम्स टू दीज डिस्प्यूटेड प्लेसेस एंड क्रिएटिंग न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स. पहले जो ये काउंटीज थी इनका नाम था हेयान एंड हेकांग काउंटीज, नाउ एक नई काउंटी इन्होंने बना दी है कॉल्ड सेनलिंग, CNLING. And this is controversial because some of these areas fall in the regions which are claimed by India, like the Aksai Chin. Aksai Chin is the disputed territory which is under Chinese control, but India claims it is our territory. तो जो आपको north eastern end of the top of Indian map दिखता है लद्दाख की साइड पे, वो वाला रीजन अक्साई चिन कहलाता है. इस साइड वाला रीजन POK कहलाता है. बीच में जो है इंडिया एडमिनिस्टर्ड कश्मीर आप कह सकते हो कहलाता है. So yeah, some parts of Ladakh and some parts of Aksai Chin are being renamed by China, but India says renaming does not change the ground reality or sovereignty. ये जो नई इन्होंने काउंटी बनाई है सेलिंग करके, this is near the Karakoram range, near the Pakistan occupied Kashmir, जहाँ पे आपके वो mountain ranges है ना K2 and all. This place is called the Wakhan corridor. This is near Siachen. And this is strategically important for China as well, क्योंकि चाइना वहाँ जो है रोड बना रहा है to connect it to Pakistan. They want to strengthen their control over this province which they call Xinjiang. And इससे इंडिया के लिए of course security concerns हैं because of the CPEC, the China-Pakistan Economic Corridor, which is a transport corridor China is building from Aksai Chin towards Pakistan-occupied Kashmir. एंड वही है, इंडिया चाइना के रिलेशनशिप में टेंशन आएगी, इससे मिसट्रस्ट आएगा एंड इंडिया हैज अर्ज्ड चाइना कि भाई पास आ जाओ, मत करो ऐसी बातें, अच्छी बात नहीं होती है ये. तो यही सारी डिस्कशन है. बांग्लादेश, करेक्ट, बांग्लादेश के साथ सबसे बड़ा लैंड बॉर्डर है हमारा 4096 पॉइंट समथिंग किलोमीटर. अनुरुद्ध सिंह सर, आई वांटेड अ मेंटर फॉर माय प्रेप बट आई गॉट गॉड्स लाइक यू. आयुष, अरे बाप रे, नहीं भाई, आई डोंट equate myself to any god by any means, just a normal mortal lowly human being who just likes to mentor students, but I appreciate the sentiment, thank you. Sonia Singh, what do you think, will the death sentence of custodial death be remitted? देखते हैं यार, कुछ कह नहीं सकते उसमें, hard to make a prediction in that case. राजीव गांधी केस में डेथ सेंटेंस कम्यूट हुआ था, what's this case in front of it? No one can predict. It depends entirely on the decision of the higher courts and finally the decision of the president. So it's hard to judge. काफी nuances होते हैं इसमें डेथ पेनल्टी के केसेस में. there are mitigating factors and there are accentuating factors. बहुत सारे फैक्टर्स को बैलेंस करना पड़ता है कोर्ट को. डेथ पेनल्टी इज ऑल्सो अ सब्जेक्ट विच इज ऑफर्ड इन लॉ स्कूल, एटलीस्ट नालसर में इट इज ऑफर्ड एज अ सेपरेट इलेक्टिव सब्जेक्ट जो आप 4th या 5th ईयर में चूज करते हो, एंड यू कैन स्टडी
in detail about how death penalty came into being and what are the ethical considerations. डेथ पेनल्टी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, बहुत सारे देशों में नहीं है डेथ पेनल्टी का प्रोविजन, तो वो बेटर कर रहे हैं अपने सिस्टम में या हम बेटर कर रहे हैं. बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है डेथ पेनल्टी, अगर आप पढ़ो उसको डिटेल में. एंड या लॉ स्कूल वुड बी फन फॉर यू गाइस. चलो आगे चलते हैं. बायोटेक्नोलॉजी कैन एड्रेस चैलेंजेस टू ट्रेडिशनल फार्मिंग प्रैक्टिसेस. 163 चिल्ड्रन बीइंग ट्रैफिक टू महाराष्ट्र फ्रॉम बिहार रेस्क्यूड इन एमपी. ओके, आगे चलते हैं. असेंबली पोल्स भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ भी यहाँ पे रेलेवेंट नहीं है. थोड़ी सी आशा भोसले जी की बात करते हैं. बोल्ड एनर्जेटिक वॉइस ऑफ मॉडर्न इंडिया. तो वी ऑल नो शी इज अ लेजेंड इन हर ओन माइट इन द field of singing and artistry. She represented the bold, expressive woman in Indian cinema, and she's often contrasted with her sister Lata ji, who had a more soft and idealistic style. Asha ji had a more lively, emotional, sensual, realistic kind of a style and range, and she had a wide range, of course: classical songs, romantic songs, bold songs, pop songs, so many songs. Dam Maro Dam she sang, Rangila Re she sang, Aiye Meherban she sang. So many songs across various eras, working with a lot of composers, be it legendary composers like Mr. R.D. Burman, or be it contemporary composers like Mr. A.R. Rahman, or be it classic ghazal works with those kind of composers like Ali Akbar Khan. She had a unique singing style. She could adapt her voice to different actors and characters. चाहे वो जीनत अमान जी को गानों में वॉइस देना होना, चाहे वो रेखा जी को वॉइस देना होना, या फिर वो काजोल को वॉइस देना होना. शी हैड अ डिफरेंट स्टाइल फॉर एवरी कैरेक्टर शी वॉज वॉइसिंग. बाकी उनका जो है इस आर्टिकल में अर्ली लाइफ वगैरह बताया. शी वॉज born in a musical family. She was a daughter of Dinanath Mangeshkar and faced multiple issues growing up: financial struggles, competition, early marriage, separation, and how she was able to build her own identity despite being in the shadow of her sister Lata Mangeshkar ji. And she rose to fame with her songs and then became a legend. बाकी अचीवमेंट्स की बात करें तो शी हैज़ बीन ऑनर्ड विद पद्म विभूषण, शी हैज़ बीन ऑनर्ड विद दादा साहेब फाल्के अवार्ड, एंड शी वाज परफॉर्मिंग लाइव एज लेट एज टिल 2024 where she was almost 90 years old. Baki, yeah, these were some things which were significant about her, how she redefined female playback singing and became a cultural icon, and her music stays timeless. This is what I like about art in general, because it leaves a lasting impression and you are remembered for it in the upcoming decades, if not centuries to come, because your legacy lives on through your art, through your creation, through your songs, which give people happiness, solace, and tranquility across generations. So yeah, pretty nice. Tragic loss to the singing community. All right, आगे चलते हैं. Let's move ahead. Trump threatens Strait of Hormuz blockade after US Iran talks end. So as we all saw that कोई निष्कर्ष नहीं निकला इन बातों का. डोनाल्ड ट्रम्प भाई साहब कह रहे हैं कि अब जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज वाली जो हरकतें कर रहा है ईरान, वो अब हम नहीं झेलेंगे. यूएस नेवी विल ब्लॉकेड द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज एंड दे वुड स्टॉप शिप्स फ्रॉम एंटरिंग और लीविंग द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज. एंड उन्होंने कहा कि अगर ईरान ने कोई भी अटैक किया तो देयर वुड बी अ स्ट्रॉन्ग मिलिट्री रिस्पॉन्स. स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज की सिग्निफिकेंस मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, हम ऑलरेडी कई बार डिस्कस कर चुके हैं. द यूएस इज सेइंग दे वुड एक्ट विद देयर एलाइज to take control of the Strait of Hormuz. They would even be sending minesweepers to clear sea mines which Iran has laid down. Iran का कहना है कि Iran will not give in to any threats, and कोई भी military ships जो enter करेंगे they will face serious action. Only civilian ships might be allowed, which means the situation is still highly tense, and there is a risk of direct naval conflict which could happen on the verge of Strait of Hormuz. So yeah, still a precarious situation, I would say. Let's hope this get resolved soon. On the left hand side, you see Ukraine-Russia trade barbs over Easter truce violations. So ये तो बहुत लंबी समय से चल रही है लड़ाई, 5 साल हो गए रशिया यूक्रेन को चलते हुए, और इनका भी जो है टेम्पररी सीजफायर अग्री हुआ था recently on Orthodox Easter, and this was proposed by Zelensky from Ukraine.
एंड रशिया ऑल्सो अग्रीड टू इस कि भाई रिलीजियस हॉलीडे है, इस दिन जो है फाइटिंग वाइटिंग नहीं करते, लड़ाई लड़ाई नहीं करते. बट what actually happened is both the sides then accused each other of breaking the truce, and this has happened thousands of times. This is nothing new here. Fighting did not stop fully, and there was only some limited calm across the 1,200 kilometer front line. Ukraine का कहना है कि there have been almost 2,300 violations done by Russia with respect to attacks, shelling, drone strikes, and Russia का कहना है कि there have been around 2,000 violations by Ukraine as well of similar nature. एंड अभी भी डिसएग्रीमेंट इनों में बना हुआ है. यूक्रेन वांट्स अ लॉन्गर सीज फायर. रशिया का कहना है कि हम ओनली दे वुड अग्री टू अ सीज फायर व्हेन यूक्रेन वुड एक्सेप्ट रशियाज कंडीशंस. तो वही है, बॉटम लाइन यही है कि यहाँ भी सीज फायर अटेम्प्ट इज गोइंग मोस्टली अनसक्सेसफुल एंड इज बीइंग ब्रोकन बाय बोथ द साइड्स रिपीटेडली, व्हिच क्रिएट्स मिसट्रस्ट. नेपाल के जो पीएम साहब हैं ये इंडिया आएंगे बायलेटरल मैकेनिज्म की मीटिंग करने. ढाका जो है दे वुड सेंड 20 मेंबर डेलीगेशन टू चाइना आउटरीच. स्पोर्ट्स में आईपीएल इज गोइंग ऑन. आरसीबी वन अगेंस्ट मुंबई इंडियंस. जीटी ऑल्सो रिसेंटली वन देयर मैच. आज जो है राजस्थान रॉयल्स और हैदराबाद का मैच है, विच आई बिलीव राजस्थान रॉयल्स जीत जाएगी बिकॉज सूर्यवंशी इज इन ब्लेजिंग हॉट फॉर्म. Zoo beats Vaishali, catches up with Indian at the top. This is golf. Okay, that's about the newspaper for the day, folks. Let's come back to our PPT, finish off the remaining articles, and call it a day. Okay. Iran and US की बातचीत हम कर चुके हैं. Let me see if there's anything new here. No, this is pretty much what we discussed. Donald Trump on Sunday said US Navy would immediately begin a blockade to stop ships from entering or leaving Hormuz after US Iran peace talks in Pakistan ended without agreement. Effective immediately, US Navy, the finest in the world, will begin the process of blockading any or all ships trying to enter or leave Hormuz, Trump said on Truth Social. Any Iranian who fires at us or at peaceful vessels will be blown to hell. Trump suggested that other countries would be involved in the blockade effort, and then told Fox News Sunday Morning Futures with Maria Bartiromo that Britain and a couple of other countries would be sending minesweepers as well. Delimitation की बातचीत कर लेते हैं थोड़ी सी. Parliament recently passed the Nari Shakti Vandan Adhiniyam in 2023 unanimously during a special session, which introduced Article 334A in the Constitution, which mandates one-third reservation for women in Lok Sabha and Vidhan Sabhas, which is the state assembly. And this is scheduled to come into effect after the completion of the next census and the census-based delimitation process. Now, we are given to understand that 334A will be amended to make women's reservation applicable from 2029 itself. 73rd and 74th Constitution Amendment Bill were finally passed by Parliament in 93, April and June 93 respectively. और सेंसस की बात करें तो पिछला सेंसस वाज ड्यू इन 2021, मतलब होना था 2021 में, बट वी ऑल नो पेंडेमिक आ गया तो नहीं हो पाया. And one consequence of this has been that over 10 crore people have been deprived of legal entitlements under the National Food Security Act that provides the basis for PM Garib Kalyan Ann Yojana. There is simply no justification except narrative management during troubled times for this tearing hurry to bulldoze extremely far-reaching changes to our polity. The process is deeply flawed and anti-democratic. Reservation for women is not the issue here. That has been settled. The real issue is delimitation, which, based on the information unofficially available, is extremely dangerous and an assault on the Constitution itself. The last article today talks about tourism and trade with respect to the Great Nicobar Island. The 92,000 crore mega infra project for the holistic development of the GNI by building it up as a port and tourism-led economy has gathered speed in the last 6 months, even as concerns remain about its impact on island ecology and the rights of local population. The Nicobaris and Shompen, these are the two indigenous tribal populations, and the administration has notified a draft master plan for the project. Apart from the international container transshipment port, the airport and power plants, the master plan envisions developing it as a seaside destination in a pristine, unspoiled, protected environment, outlining plans for business, adventure, biodiversity tourism, family entertainment, amusement parks, along with adequate social infra for health, education, and livelihood. This plan is projected for a population of over 3.36 lakh by 2055, by which time the expected tourist inflow will be 1 million per year. Over 70% of direct employment the government hopes to create will be in tourism and allied sectors. Current population of Great Nicobar Island is less than 10,000. This transformation of Great Nicobar Island, aided by ICTP, is crucial to leverage the strategic importance of island's location at the western entrance of the Strait of Malacca. This is near Indonesia. This is also a major shipping route. And the draft plan has said the port will help India achieve its aim to capture a significant share in global sea trade.
as per the Strait of Malacca, which I was telling you. So that brings us to the end of today's discussion. Array, एक और slide है अपने पास. Okay. But while the administration has sought public suggestions and objection for 30 days, it remains unclear when this window will remain open, given that draft does not mention when it was notified. This follows another draft plan to relocate these local Nicobarese communities to make way for the project. The two plans seemingly contradict each other with regard to where existing population may be relocated, which has renewed the fear among these people. These communities have been opposing the project's clearance since 2022, alleging that their forest rights were not settled. NGT has set aside these concerns about the project's impact on biodiversity by citing its strategic importance. A challenge to the project's clearances remain in the Calcutta High Court. Some have also questioned its commercial and naval merits. Considering that this project aims to irreversibly alter the demography and ecology of the island, the most prudent path for the government is to take the time needed to build a more holistic consensus over it. That brings us to the end of the discussion. Now, vocab for the day, the first word is cynosure. Cynosure matlab center of attraction, center of admiration, something which everyone wants. The company is the cynosure for anyone wishing to make it in the music business. Just like the top 3 NLUs are the cynosure for anyone wishing to pursue legal studies. The next word is effusive. Effusive मतलब होता है एकदम खुले दिल से अपनी बात express करना, expressing feelings of gratitude, pleasure or approval in an unrestrained or heartfelt manner. Gushy, unrestrained, unreserved are synonyms. Restrained, undemonstrative, reserved are antonyms. Our host gave us an effusive welcome. The last word is travail. Travail मतलब होता है difficulty, दिक्कतें, a state of great suffering of body or mind. Distress, agony, anguish are synonyms. No greater travail than of parents who have suffered the death of a child. Comfort, relief, consolation are antonyms. And that brings us to the end of vocab. Travail is difficulty, effusive is unrestrained, gushy, and cynosure is something at the forefront or at the center of attraction. With that, we come to the end of today's discussion, folks. Another thing, always hear this word holistic. What does it mean, and what is an example of something holistic? Holistic is something which is okay, interesting. How do I explain this? Holistic is something which has multiple facets, which is all rounded in nature, आप कह सकते हो, which is overall and complete in nature, which touches various aspects of thing, उसको आप holistic कह सकते हो. So for example, holistic university would be one which focuses on different aspects of learning through teaching, different types of pedagogy, and so on. A holistic player, let's say, would be one who could play shots all around the ground. So holistic is complete, or touching various aspects and dimensions. That is what the word means. Of course, the context also matters, but that is the rudimentary understanding of it. Yes, as Ridhima said, something that is whole rather than just some parts of the whole. Correct. Textbook definition. I like my definition better. Okay, chalo, that's all for the day, folks. Thank you so much for participating. I'll see you all tomorrow in another session. Till then, take care. Tata, bye-bye. See you all. Good night.